अमरीकी नायब सदर ने दावा किया है कि अमेरिका ने लेबनान को जंगबंदी में शामिल करने का कभी वादा नहीं किया। सीज फायर का ताल्लुक ईरान से है। जी डिफेंस ने बावर कराया है कि ईरान ने समझा कि लेबनान सीज फायर में शामिल होगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा। अगर ईरान ये चाहता है कि लेबनान के मसले पर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं तो ये उनका अपना इंतखाब होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो इस फैसले को गैर दानिशमंदाना समझते हैं। उन्होंने आबना होर्मुज़ के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उसके दोबारा खुलने के आसार जाहिर हो रहे हैं। जी डिफेंस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात किए सौदेबाजी पर संगीन नताइज की धमकी देती। I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. I encourage the Iranians to come to the table seriously. We've seen some signs that they're going to do that. We've seen some signs of bravado. Fundamentally, we're in a good spot. They're reopening the straits. We have a ceasefire. And frankly, if they break their end of the bargain, then they're going to see some serious consequences.